स्वागत है दोस्तों आपका व्यू स्पोर्ट स्काउट्स में। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित और इस वीडियो में मेरे साथ एक नहीं जबकि दो गेस्ट हैं। पहले गेस्ट हैं मेरे, आई एम ऑनर्ड टू बी विद कैप्टन ऑफ द इंडियन फुटबॉल टीम सुनील छेत्री। वेलकम सुनील। थैंक यू सो मच। और हमारे दूसरे गेस्ट हैं एक शख्स जिनके हर एक शब्द से फैंटेसी के फुवारे निकलते हैं। वेलकम अनंत त्यागी। Thank you, Rakshit. As you can see, मेरी fantasy की teams इतनी खराब बन रही थी कि you had to call the captain, leader, legend of the national team to make sure that this time कोई गलती ना हो. Absolutely. And I'm sure we'll have a lot of fun recording this video because proper season अब शुरू हो चुका है। कर्टन रेजर जिसे कहते हैं यूरोपियन सीजन का, लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी जो है कम्युनिटी शील्ड मैच। ये ऑफ कोर्स एक मैच होता है बिटवीन द प्रीमियर लीग चैंपियंस जो थे मैनचेस्टर सिटी एंड ऑफ कोर्स द एफए कप विनर्स जो थे लिवरपूल। सो पहले बात करते हैं हम मैन सिटी की। सुनील, लास्ट डे ऑफ द टूर्नामेंट पे, प्रीमियर लीग के लास्ट डे पे मैन सिटी ने काफी ड्रामेटिक फैशन में दे सिक्योर्ड द टाइटल एंड इट वाज ऑब्वियसली उनके फैंस के लिए अ ग्रेट मोमेंट, बट चैंपियंस लीग इज समथिंग व्हिच दे वंस अगेन मिस्ड आउट ऑन। So इस season, how do you see Pep with his new troops such as Haaland, etc., performing in all competitions this season? The same way that they performed in last 3 years, a little bit more better because of the kind of striker they have. I think ऐसा नहीं है कि वो खराब खेले इससे वो चैंपियंस लीग ना जीत पाए। हम सबको पता है क्या हुआ था रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। आई थिंक वो 10 मिनट का जो फेस था प्रॉब्लम जिसकी वजह से शायद वो फाइनल में एटलीस्ट ना पहुंच पाए। तो कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है उनको कि वो हर एक टूर्नामेंट जो खेले उस पे उसके जीतने के हकदार ना हो या दावेदार ना हो। और उसके बाद उन्होंने साइन किया हालैंड को जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट नंबर 9 है, इफ नॉट द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो आई थिंक दे आर जस्ट गोइंग टू बी मोर स्ट्रॉन्गर देन व्हाट दे वर लास्ट ईयर। बिल्कुल, वेरी वेरी फैसिनेटेड टू सी कि हालैंड जो एक प्रॉपर गोल मशीन है कैसे फिट करते हैं मैन सिटी में इस सीजन। आई थिंक इस मैच में हमें काफी आइडिया हो सकता है। अनंत, आपसे बात करते हैं लिवरपूल की। काफी डिसअपॉइंटिंग एंड टू द सीजन था। दे ऑब्वियसली वन द एफए कप, दे आल्सो वन द कारबाओ कप, बट प्रीमियर लीग टाइटल बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे दे लॉस्ट आउट एंड ऑफ कोर्स काफी हार्ट ब्रेकिंग फैशन में चैंपियंस लीग फाइनल भी दे लॉस्ट टू रियल मैड्रिड। सो हाउ विल दे रिकवर फ्रॉम दोस टू हार्ट ब्रेक्स और हाउ डू यू सी लिवरपूल प्लेइंग दिस सीजन? I think they'll be fine, यार. I think apart from the fact that they missed out on that quadruple जो शायद वो 60-62 साल में पहली बार करने वाले थे. The disappointment was कि even in the cup finals that they played, it had to go all the way to penalties. So all the class and that we expect from Liverpool, they still had to work very hard for it. And obviously after what happened in the Champions League final, where I think उनको पहले ही winner declare कर दिया गया था even before they took to the field. So there's a lot of disappointment, but I think that will also bring out the fire in them because they'll have a point to prove. If they'd won the Premier League or they'd won the Champions League, you'd imagine कि थोड़े से और complacent होते हो. The problem is, I think Klopp has also said that their pre-season preparation has not been the best because this is the World Cup year, so teams have had to assemble very quickly. He's not been able to put his plans in place. But ये थोड़ी से, I think, psychological battles भी होती हैं where managers start, reducing the expectations because I think Liverpool were victims of expectations last time. बिल्कुल बिल्कुल। सुनील, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा बिकॉज आपको बहुत एक्सपीरियंस है इसमें ना। प्री सीजन में ऑब्वियसली मैन सिटी ने 2 मैचेस खेले हैं, लिवरपूल ने 4 मैचेस खेले हैं एंड ऑफ कोर्स हमें पता है कि सिटी और लिवरपूल 2 टीम्स हैं जो फुल फ्लो में दे आर एब्सोल्युटली ब्रेथ टेकिंग टू वॉच। बट इस पर्टिकुलर मैच का फ्लो कंसिडरिंग कि ये यू कैन से प्री सीजन और सीजन के बिल्कुल जस्ट बीच में है, आप कैसे फ्लो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप नंबर ऑफ गोल्स की प्रेडिक्शन की बात करें? सो हाउ डू यू सी दिस मैच फ्लोइंग? जनरली क्या होता है कि द मोर मैचेस यू प्ले फॉर बिगर टीम द मोर स्टेबल यू आर डिफेंसिवली। ये एक जनरल फॉर्मूला है कि आप जितने गेम्स खेलेंगे उतना ही आप और स्टेबल होते जाएंगे बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड मोर एज हाउ टू बी अ यूनिट डिफेंसिवली। एंड इसीलिए आप देखते हैं कि स्टार्टिंग में बहुत सारे ऐसे गोल्स आप देखने को मिलते हैं आपके अगेंस्ट और आपकी तरफ से। जनरली आप इन टूर्नामेंट और इन बिटवीन अ सीजन आप नहीं देखेंगे। And that is why people say that there are going to be goals in tournaments like Community Shield, जो कि सीजन के स्टार्टिंग में होता है। But having said that, ये ऐसी 2 टीमें हैं, no matter कहाँ खेले, कितने फिट हो या ना हो, they always play the game together because of these 2 teams who they are. इन दोनों को पता है कि ये आगे जाके जितने भी टूर्नामेंट खेलेंगे एक दूसरे से भिड़ेंगे to win the tournament. So that is why you might see probably the best game that they're going to bring on the table. जनरली होता है माइंडसेट कि आप प्री सीजन है, you don't go 100% and stuff like that. You pick him, you don't pick him, you give him rest and stuff like that. But not in this game. बिल्कुल, एंड गोल्स इज समथिंग जो ऑलमोस्ट गारंटीड होते हैं जब ये दोनों टीम्स खेलती हैं।
प्रीमियर लीग में इन दोनों टीम्स के बीच में 2-2 ड्रॉज हुए थे और एफए कप में लिवरपूल ने मैन सिटी को 3-2 हराया था। सो गोल्स आर ऑलमोस्ट गारंटीड इस कम्युनिटी शील्ड में भी। शुरू करते हैं फोक्स विद आवर बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन। एज ऑलवेज वी विल स्टार्ट विद द फॉरवर्ड्स। सुनील, पहली फॉरवर्ड पिक कौन है आपकी फॉर दिस पर्टिकुलर मैच? I'm going with Haaland. Of course. एक रूल है कि अगर कोई नया प्लेयर एक लीग में आता है, स्पेशली प्रीमियर लीग में, उसको आपको 1-2 हफ्ते देखनी चाहिए, उसके बाद अपना टिप्पणी उन पे देना चाहिए। But I'm going with the superstar. I think he really fits the bill what Man City wants. Man City doesn't only need a striker who can score goals, but उनका जो डिमांड है पेप का from their number 9s to work off the ball is tremendous. और अगर आपको मैं बोलूं pick one player who is going to score goals but also work hard without the ball is going to be Haaland. I mean, his work rate without the ball is outstanding. His presence last 3-4 साल में अगर आपने देखा मैन सिटी के पास, even when they had Aguero, they did not have a proper number 9 who can hold the ball. Someone like a Drogba or Suarez who are big body players. But Haaland has everything. जितने भी चीजें on paper एक स्ट्राइकर को चाहिए, इनमें सब है. And with the kind of supply he's going to get at Man City, I think he is set for a flourishing days ahead. बिल्कुल। अनंत त्यागी, क्या आप सुनील छेत्री की फॉरवर्ड पिक को मैच कर सकते हैं? नहीं कर सकता, बट कोशिश करूंगा। I mean, Mohamed Salah doesn't need any introduction to Premier League fans or fans of football around the world, so he will be my pick. But I completely agree with Sunil भाई। Usually आप टाइम देते हो किसी को और उसके बाद जज करते हो कि अगर वो 10 करोड़ का प्लेयर है तो वो क्यों है आपकी फैंटेसी 11 में, और स्पेशली बिकॉज ही इज एन अनटेस्टेड quantity in the Premier League at the moment. But somebody who's clearly not untested and who's proved himself enough and more times is Mohamed Salah. तो अगर मैच करने की कोशिश करूंगा तो सिर्फ उन्हीं से कर सकता हूँ। Also with all the contract extension saga that I think हर ट्रांसफर विंडो में एक साला का सागा जो है वो होता ही है। It's just the way it has been. It took a while but eventually got that contract extension. अब इसके बीच में सादियो माने चले गए हैं बायर्न म्यूनिख, Roberto Firmino might be heading to Juventus according to reports. Darwin Núñez को उन्होंने as a number 9 sign किया है। I think that should create enough fire in the belly for Salah कि यार ठीक है मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन तो हो गया बट कोई मेरी बात नहीं कर रहा सीजन की शुरुआत में। एंड आई थिंक Salah could be at his very dangerous best if he is given that responsibility to lead the attack. There's no more Sadio Mane and he can almost shepherd Darwin Núñez into becoming a better player in the Premier League because he exists, but also against a side like Man City जिन्होंने February 2021 से लिवरपूल को हराया नहीं है, I think Salah will once again be a very difficult customer for them to handle. बिल्कुल। साला स्कोर 23 प्रीमियर लीग गोल्स लास्ट सीजन, इजीली लिवरपूल के टॉप स्कोरर थे वंस अगेन, स्पेशली विद माने, और उनके ऊपर काफी गोल स्कोरिंग बर्डन आ सकता है इस लिवरपूल टीम का। सो 2 फॉरवर्ड पिक्स है हमारी और अब हम चलते हैं टू द मिडफील्ड सेक्शन। अब बात करेंगे हम कि कौन से मिडफील्डर सुनील छेत्री को सबसे ज्यादा पसंद है। सुनील, हु इज योर फर्स्ट मिडफील्ड पिक फॉर दिस मैच? Oh, it's like going to a nice mall with all beautiful things to shop. I think because Mane nahi hai, and what in the later half Diaz did for Liverpool, I'm going to pick him. Again, somebody who's a very, very complete player. Unka jo work rate tha last year, I think when Mane and Salah came back from their duties for their countries, there was a slight dip in the form, not for Mane but more for Salah. और उस टाइम पे Diaz, I think did really, really well. He looked out of these three the most certain player to affect the game with his assist and score. And अगर इस साल जब Mane नहीं है, I think he's going to get more confidence. He's pretty sure if he does well and if he's injury free, he's going to get more games. So that is why I pick him. बहुत ही सॉलिड पिक ऑफ कोर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि माने के बिना कैसे ये लिवरपूल फ्रंट 3 फंक्शन करेगा। अनंत त्यागी, आपकी पहली पिक कौन है मिडफील्ड में इन दिस मैच? यार अक्षय, तुम सारी महंगी शॉपिंग मुझसे ही करवाते हो। साला को 10 करोड़ दे दिए, अब मैं एक और 10 करोड़ का प्लेयर चूज करने वाला हूँ। But I mean, it's all this chat of Ronaldo being in the Premier League and Salah and Mane moving away and so many good players around. I think for me the best player in the Premier League is the one I'm going to choose in the midfield, and that's Kevin De Bruyne. Can score you goals, can take set pieces, can give you plenty of assist points, has an unbelievable pass completion rate, great vision for a through ball, just the complete package. अगर आप एक midfielder ढूंढ रहे हैं, जो हम अक्सर बात करते हैं हमारे videos में, and I'm sure he'll hit the ground running here because Kevin De Bruyne, he's literally like the middle name of Man City. If you remove him, Man City are half the force that they were, and you saw that also. जिस विंडो में थोड़ा सा उन्होंने स्ट्रगल किया पिछले सीजन,
उसमें Kevin De Bruyne was either not there or he wasn't at his fittest best. He comes back into the side. A fit and hungry Kevin De Bruyne is, for me, a must-have. Even if you were to choose a joint best 11 of Liverpool and Man City, regardless of fantasy points. बिल्कुल. और so let me add something. He is somebody who is a big match player. Whenever there is a big game, you will see Kevin De Bruyne affected it. बिल्कुल, बहुत ही सॉलिड पॉइंट है. एंड हालैंड के आने से आई थिंक डे ब्रुयने का अपील इवन बढ़ जाता है फ्रॉम अ फैंटेसी पर्सपेक्टिव, बिकॉज हालैंड एक एलीट फिनिशर है, और अगर आप चांस क्रिएशन की बात करें सो डे ब्रुयने से ऊपर कोई ऑब्वियसली है नहीं. सो ही विल बी लिकिंग हिज लिप्स कि वो इतने सारे क्रॉसेस जो राइट हैंड चैनल से देते हैं वो हालैंड टैप इन करके फिनिश कर सके. आई विल गो फॉर 2 मिडफील्ड पिक्स, और थोड़ी अंडरवेलमिंग पिक्स हो सकती हैं आप लोगों की पिक्स के सामने, बट आई विल गो फॉर रॉड्री एंड फैबिनियो. 2 प्लेयर जो काफी सिमिलर रोल्स प्ले करते हैं अपनी अपनी टीम्स के लिए, मैन सिटी और लिवरपूल, बट ये दोनों प्लेयर्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा टैकल नंबर्स देंगे, बहुत ज्यादा इंटरसेप्शन नंबर्स देंगे, बहुत सारे पासेस कंप्लीट करेंगे, एंड ओकेजनल लॉन्ग रेंजर भी मार सकते हैं, स्पेशली अगर आप रॉड्री की बात करें. रॉड्री इनफैक्ट कंप्लीटेड द 3rd हाईएस्ट नंबर ऑफ पासेस इन द एंटायर प्रीमियर लीग लास्ट सीजन. सो उनसे आपको डेफिनेटली पासिंग पॉइंट्स मिलेंगे. अगर आप टैकल इंटरसेप्शन की बात करें, सो ऑफ ऑल द अटैकिंग प्लेयर्स, ऑफ ऑल द नॉन डिफेंडर्स, फैबिनियो सबसे ऊपर है लिवरपूल के लिए. सो अगर लेट्स से कि हाई स्कोरिंग मैच होता है या लो स्कोरिंग मैच होता है, आपको चीप मिडफील्ड इनेबलर्स चाहिए, देन आई थिंक फैबिनियो एंड रॉड्री आर 2 8.5 एसेट्स जो आपकी फैंटेसी टीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. डिफेंडर्स पे चलते हैं. ऑफ कोर्स सुनील, हमने बात करी है अबाउट प्लेयर्स जो इन दोनों टीम्स में एक्चुअली लिस्टेड डिफेंडर्स हैं, बट बहुत ही अटैकिंग वे में ऑपरेट करते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट योर डिफेंसिव पिक फॉर दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन. Yeah, I'm a big fan of Cancelo. Not only in terms of getting points for what we are creating right now, but also as somebody to watch. I'm a huge fan. Somebody who is a right footer, plays as a left back, and still affects the game the way he does. Even jab Kyle Walker injured and when he had to be deployed on the right side, he's equally efficient. There are some question marks when it comes to defending, but then when if you have Man City, you're going to have all the ball position. And going forward, he looks so clear. Unke touches, unka vision, it is almost like an attacking player. You know, he reminds me of players like Marcelo, like Dani Alves, who played as left back and right back, but who was so attacking minded and so good at it. And Cancelo for me is probably, I know there is Arnold on the other side, and even then probably even if I had a chance, I would put Cancelo because of the way he affects games. बिल्कुल, कांसेलो इज ऑब्वियसली समवन जो राइट बैक खेल सकते हैं, लेफ्ट बैक खेल सकते हैं, मिडफील्ड में ऑपरेट कर सकते हैं इमरजेंसी मिडफील्डर की तरह. ही कैन प्ले अ मल्टीट्यूड ऑफ रोल्स, एंड आई थिंक ही समवन जो बहुत ही क्रूशियल हो सकते हैं आपकी फैंटेसी टीम्स के लिए. एक और क्रूशियल पिक की बात करें अनंत, तो आप आई थिंक यू आर गोइंग फॉर अ सर्टेन सेंटर बैक. Yes, I'm going with Virgil van Dijk, but just a bit about Cancelo that Sunil bhai pick. I think it's also a very good pick from a balancing the fantasy team point of view, because Salah, unlike Kevin De Bruyne, sometimes goes missing in big games. And I have a feeling that because they'll be up against each other with Salah playing as an inverted winger, if Salah has a good game, maybe Cancelo doesn't, but if Cancelo has a good game, he can get you points, and you know maybe Salah will not be able to give you the return. So जब हम balance करते हैं अपनी टीम को, उस हिसाब से भी अच्छा हो सकता है. Virgil van Dijk will also have to play that balancing act because Alisson Becker is not available due to the injury. और इस लिवरपूल साइड में काफी सारे बिग नेम्स मिसिंग है because of the injury concerns that they've had. Oxlade-Chamberlain is in the medical bay. Diego Jota को hamstring injury हुई है. So Virgil van Dijk is like that big figure who's going to be pivotal to their defense. पिछली बार ये जब प्रीमियर लीग में दोनों टीमें मिली थी, we've had 2 very exciting 2-2 draws between these two sides, right? So you're expecting goals. And I would expect that somebody like Virgil van Dijk who had to come back from a very difficult injury, and Sunil bhai knows it's almost impossible to have a top-notch season straight after you come back from an injury like that. But he still managed to hold his own. I think this is the season where we'll get peak Virgil van Dijk back. So even from that standpoint, I would imagine he'll be crucial, and you never know, he might just get you goals on the other side if there are set pieces. बिल्कुल, अगर आप लिवरपूल की बात करें तो उन्होंने 19 गोल्स स्कोर करे थे सेट पीसेस से लास्ट सीजन, व्हिच वाज द सेकंड हाईएस्ट इन द प्रीमियर लीग. एंड ऑफ कोर्स वी नो वैन डाइक इज अ ग्रेट हेडर ऑफ द बॉल. सो एज यू मेंशन, वो अदर साइड ऑफ द फील्ड में भी काफी इंपैक्ट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम डिफेंडिंग. तो 2 डिफेंडर्स हैं, दोनों मैं पिक करता हूं. पहले मैं बात करना चाहूंगा ऑफ कोर्स ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड की, जो मेरे हिसाब से एक मस्ट हैव पिक होनी चाहिए आपकी फैंटेसी टीम्स के लिए. फॉरगेट हिज प्राइस, फॉरगेट द फैक्ट कि दोनों टीम्स गोल स्कोर करेंगी. ही समवन जो मेरे हिसाब से एसेंशियल है.
ये एक प्लेयर हैं जो सेट पीसेस पे है लिवरपूल के लिए। 90 चांसेस क्रिएटेड इन द प्रीमियर लीग लास्ट सीजन, नंबर 1 इंक्लूडिंग ऑल द फॉरवर्ड्स, ऑल द मिडफील्डर्स, ऑल द विंगर्स। एक डिफेंडर ऐसे हैं जिन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस क्रिएट करी थी इन द प्रीमियर लीग। सो ही समवन जो एक प्रॉपर एसेंशियल स्टेटस है, चांस क्रिएशन नंबर्स, असिस्ट पोटेंशियल, क्लीन शीट आती है लिवरपूल की बाय चांस, तो ये भी आपको उसमें भी पॉइंट्स देंगे। सो आई थिंक ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड शुड बी अ नेल्ड ऑन ऑप्शन आपकी फैंटेसी टीम्स के लिए। आई थिंक जो लास्ट डिफेंसिव पोजीशन है थोड़ी ट्रिकी है, बिकॉज मैन सिटी वी डोंट नो एग्जैक्टली कौन सी सेंटर बैक पेयरिंग होगी। डियास अभी इंजरी से आ रहे हैं, लपोर्ट इज रूल्ड आउट, आके ने काफी मिनट्स खेले हैं, स्टोन्स उनके प्री सीजन टूर में नहीं गए थे, बट आई एम अज्यूमिंग कि क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट मैच है, आई थिंक रूबन डियास विल प्ले। और लाइक वैन डाइक की हमने बात करी थी, रूबन डियास इज द लीडर ऑफ द मैन सिटी डिफेंस एंड ही इज आल्सो समवन जो ऑब्वियसली गोल स्कोर कर सकते हैं हेडर से। अगर मैंने लिवरपूल की बात करी थी सेट पीसेस से, मैन सिटी ने हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स सेट पीसेस से लास्ट सीजन स्कोर करे थे विद 22। सो डियास इज आल्सो समवन जो काफी इफेक्टिव हो सकते हैं इन दैट रिगार्ड। नाउ सुनील, एक पोजीशन बची है, गोलकीपर। हु इज योर शॉट स्टॉपर फॉर दिस मैच? आई थिंक मेरी चॉइस थोड़ी इजियर कर दी एलिसन ने अपनी इंजरी को लेकर। सो आई एम गोइंग विद एडिसन and both goalkeepers, even if he was available last season to pick up, both are amazing. I think modern football में goalkeepers, इन दो goalkeepers ने खेलने का तरीका ही चेंज कर दिया है। If you see, probably they will not be the worst touch in the whole team. If you compare all the players, I don't want to demean anyone, but inke touches are amazing. The way they set up, the way they pass, the way they become the last man and keep the ball is amazing. And Ederson is probably second to none in the world. So I'm going to pick Ederson. ऑफ कोर्स जैसे सुनील ने मेंशन किया, एलिसन जो लिवरपूल के गोलकीपर हैं इज रूल्ड आउट फॉर दिस मैच। इनफैक्ट उनके जो सेकंड कीपर हैं केलेहर, ही इज आल्सो अनअवेलेबल। सो आड्रियान खेलेंगे और वो पोटेंशियल एक वीकनेस हो सकती है लिवरपूल की डेफिनेटली इस पर्टिकुलर मैच में, क्योंकि उनके थर्ड गोलकीपर खेलेंगे इन दिस कॉन्टेस्ट। सो दिस इज आवर बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं हम हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक्स की, वो कुछ प्लेयर्स जो ग्रैंड लीग प्लेयर्स को जन्नत ऑफ कोर्स दिखा सकते हैं। सो सुनील, लेट अस स्टार्ट विद यू। कौन सी है वो एक रिस्की पिक आपकी इस मैच में which can benefit fantasy players? I'm going with Kyle Walker. I think he is a little bit underrated, also because of the kind of season he had last year. हर मैच में अवेलेबल नहीं थे, थोड़े इंजरी से जूझते रहे, but I think he's a top pick. लोग कहते हैं थोड़े इराटिक है अपने फाइनल बॉल को लेकर। ऑफ कोर्स जब आपके इस तरफ कैंसेलो खेल रहे हो और हर मैच में असिस्ट दे रहे हो तो आप पे एक क्रिटिसिज्म आ सकता है, पर आई हैव फीलिंग दैट दिस इज गोइंग टू बी इजी एज फार एज रिकवरी रन्स आर कंसर्न्ड, बीइंग अ डिफेंडर, गोइंग फॉरवर्ड एंड अटैकिंग विद द टीम इज कंसर्न्ड, he is top notch and I'm expecting that he's going to turn up more and have his name on the score sheet as assists are concerned. So I'm picking Kyle Walker. That's a very interesting pick. Kyle Walker का प्राइस काफी हाई है and that's what makes him a very intriguing high risk high reward pick for सुनील छेत्री। अनंत त्यागी, आपकी बात करते हैं, कौन है वो एक इंपॉर्टेंट रिस्की पिक जो ग्रैंड लीग प्लेयर्स को once again could be very very crucial for them अगर उनको फर्स्ट पोजीशन नेल करनी है? Yeah, firstly, just on Kyle Walker, he's slightly cheaper than Trent Alexander-Arnold. So if you're definitely thinking Man City are going to come out on top in this game, then that could be a very interesting pick. बिल्कुल। मेरी pick है Bernardo Silva. Even though I've been hearing rumors that he has been offered to Barcelona, and if that is the case, and if this were to be a swan song, maybe he's going to come big in this game. So maybe instead of a Luis Diaz. Never go against Sumil Chhetri in Indian football or in football in general. But if you want to drop Luis Diaz and pick another midfielder, you can go with a Bernardo Silva perhaps. He scores goals. I think he got 13 goals, 7 assists in the last season. Just an engine in that midfield for Man City. I know a lot of you would anyway try to pick him. But कभी-कभी budget balance करने की वजह से जो है, you have to drop a certain key players from your side and maybe pick like a Fabinho. But Bernardo Silva, if you fancy Man City in particular, I think could get you lots of points if he starts the game or if he comes on from the bench. बिल्कुल। Also Bernardo Silva hates Liverpool. Last to last season जब गार्ड ऑफ ऑनर लिवरपूल को देना था मैन सिटी को, तो he was the only one who did not clap. So उनका एक बीफ चलता रहता है लिवरपूल के साथ. I think he'll turn up and I think he's a great high risk high reward pick for this match. अगर मेरे को पिक करना होगा, I'll also go with a Man City player and that is Jack Grealish. Now Raheem Sterling obviously जा चुके हैं, Phil Foden is not match fit and Grealish is expected कि वो लेफ्ट
हैंड साइड चैनल पे ऑपरेट करेंगे इन दिस मैच. नाउ पहला सीजन ऑफ कोर्स उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट था. एस्टन विला से वो मैन सिटी आए थे तो काफी सेटल इन होने में उनको टाइम लगा था. मे बी वी विल सी द बेस्ट ऑफ जैक ग्रेलिश इन अ मैन सिटी जर्सी दिस सीजन. ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि लिवरपूल अपने मैक्सिमम चांसेस राइट हैंड साइड से कंसीड करती है. ट्रेंट ऑब्वियसली हमें पता है नॉट एज गुड डिफेंसिवली एज रॉबर्टसन इज ऑन द अदर साइड. सो मे बी ग्रेलिश इज समवन जो उस वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. सो अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, ग्रेलिश आई थिंक इज अ पिक जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा. हाई रिस्क है बट आपको काफी बड़ा रिवॉर्ड दे सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर मैच. सो ये हो गई हमारी रिस्की पिक्स. अब ऑब्वियसली बची है टाइम स्कोर लाइन प्रेडिक्शंस की. सुनील, अनंत, व्हाट आर योर स्कोर लाइन प्रेडिक्शंस? विल स्टार्ट विद यू सुनील. I'm going for a Manchester City win. I'm really rooting for Haaland. I'm not a Manchester City fan. I like to watch Premier League more. I don't have any favorites, but just because of Haaland, I'm going with Man City, and I'm going for a 2-1 score. Anant, what about you? Yeah, likewise. A single goal margin between Man City and Liverpool, but मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादा goals मैं expect नहीं कर रहा because you'd expect Liverpool and Man City, both the managers to choose a more conservative approach. ज़्यादा injuries नहीं होनी चाहिए. Season जल्दी शुरू होने वाला है. I think Liverpool play within 24 hours again in a friendly. Then 6th को they are playing Fulham. So नए season को ध्यान में रखते हुए I don't expect them to go all out for it. Penalty shootouts मुझे लगता नहीं कि इस बार होगा जैसे कि FA Cup semi-final में almost नौबत आने वाली थी with Man City giving them an almighty scare. But I think because of the goalkeeping situation with Liverpool and also the injury worries to Diogo Jota, I'll expect Haaland to have a good debut and Man City to come out on top. Okay, so I'll make it 3 from 3 then. Man City, I'm expecting to win this match. That means Liverpool are surely going to win now. So मेरा prediction है कि I'll give them a 2-goal winning margin. So 3-1. Man City win is my prediction. I think once again I agree with you guys कि Haaland is someone who I'm very very excited to see, and I think he'll set the ball rolling, and I think I'll back him कि इस match में he might get a goal and maybe a couple and maybe 3 as well. So 3-1 Man City win is my prediction for this particular match. Can I give a small tip to everyone who's listening? Yeah. बिल्कुल please go ahead. See, at the end कल match के बाद क्या होगा? No one can predict completely the score line. What helps is if you ask yourself the question, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? Once you answer the question yourself, then you can make the team better. ये गलती मत करना कि वो प्लेयर फॉर्म में है, वो प्लेयर फॉर्म में, उसने ये किया, वो ये किया है. उसके पहले अगर आप ये पूछें अपने आप को कि इस 2 मैच में कौन जीतने वाला है, और जो भी आपको जवाब मिले उसके बाद अगर आप टीम बनाओ, taking cue from what Anant said, it's very very important. Once you know within you who you think is going to win, then making the team is a slightly easier job for you. With this pearl of wisdom from the legendary Sumil Chhetri, I think it's time to wrap up this video. Thank you both for joining. Wishing you all the best for this match. Stay safe and I will see you soon. Cheers guys. Thanks. Thank you so much guys. Thanks a lot.